Good morning, everyone. I am Tanvi Sharma, Associate Fellow, Environment Education and Awareness, TERI. We welcome you all to the World Sustainable Development Summit 2022, the annual flagship initiative of the Energy and Resources Institute. The present state of planetary health and humanitarian crisis calls for revisiting the agenda around global action and equity. The 21st edition of WSDS is being held from 16 to 18 February 2022 under the umbrella theme of Towards a Resilient Planet, Ensuring a Sustainable and Equitable Future. In April 2017, Tata Steel Foundation and TERI launched its joint initiative, the Green School, to create awareness about environmental issues in school networks through curriculum linkages, action projects, and capacity building activities. Continuing its bequest, the Green School executed the third phase of the project in the areas of Jharkhand and Odisha to reach out to more people and educate them about environmental sustainability. Currently, this initiative is in its fourth phase and is continuously expanding the outreach to new locations across the two states. Also, activities were transformed from offline to online to address the challenges posed by COVID-19 pandemic. In this phase, students acted as the Green School buddies and took the lead in taking actions at their level to protect the environment or bring some positive change in the community. They were also motivated to take informal sessions on topics like water, energy, waste management, and forest and biodiversity to engage the whole school fraternity in mega awareness drives at school and community levels. The thematic track on Futurists of the Future, a younger, greener collective, represents such surprising bold actions. During the track, we shall hear about the steps being taken towards environment protection and conservation by young crusaders of change who have already embarked on the path of sustainability. This theme will also cater to discussions on the importance of education in channeling youth energy towards a greener future. With this very brief background, I would now request Mr. Saurabh Roy, Chief Corporate Social Responsibility, Tata Steel Limited, to present the opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Tanvi. I hope I'm audible. Good morning, everyone. It's an absolute pleasure and privilege to be, part of the World Sustainable Development Summit. And I'm particularly delighted because, this platform today is being accessed by some outstanding people who do some outstanding work through this session. We've chosen to call this session Futurists for the Future, right? This is founded on two beliefs with which TERI and the Tata Steel Foundation are working together. One is that the future has to be more natural. Right? The future has to be closer to ecology. The future has to be more conscious of the kind of changes that are happening in the climate all around us. So the future has to be more natural. And the second belief is, there are the only natural futurists. Future thinking, which often in the conference room construct, which is an exercise that we do, but if you actually go to children, they're the most natural futurists, right? So based on this, I think the Green School program was commenced. Tata Steel Foundation works with more than 1 million children directly. And within our work, this collaboration with TERI, the Green School project, is a particularly exciting one because it talks of creating change agents and creating a culture of climate consciousness, creating a culture of environmentalism, if I may use that word, and making sure that the thinking, the thought processes, making sure that education systems, which are sort of building our tomorrow, continue to be structurally conscious of the ecological imperatives of the world today, right? The program currently runs in Jharkhand and Odisha. This part of the world actually presents an intersection of three very interesting trends, if I may say so. One is, I think there's enough evidence which is now coming out saying that the eastern part of the country is possibly emerging as a new spots of vulnerability as far as climate trends are concerned.
So we are this project, the Green School project, is working on a greener future in parts of the country where which are possibly going to be amongst the most vulnerable going forward, and therefore a future consciousness is very necessary. So that's one. Second is, there are also parts of the world, particularly where the Green School program works, which are very intensive in demographic terms with indigenous communities, right? And who are the original naturalists, where ecological thought is almost part of the DNA, and there are many lessons to be learned, right? So that's the other exciting piece. And third, I think. Many people talk about the demographic dividend of the country that is going to get apparent over the next few years. But within the country, again, the eastern part, Bihar, Jharkhand, Odisha, these are the states which are projected to have the youngest population within India. So in many ways, this is probably going to be amongst the youngest regions of the world, right? So the youngest regions of the world, possibly the more vulnerable regions of the world, and a place where natural wisdom on ecology and environment exist. So it is this intersection of many things which makes the Green School program, such a timely and a wonderful point of engagement. And of course, the beauty is over the years, the way children and schools at an institution level and at an individual level have actually taken to the program, taken to ecological thought and action. And we have seen this evolve, and you will hear some of these stories in the course of the session today across various domains. And do try and give a shout out to the various stories that you hear. And we've also had the very difficult task of picking some stories and bringing them to you. But I can assure you that if you hear the few stories that you hear, there are an equal number of outstanding stories who are not coming on here, and it is the continuous effort of TERI and the Darsil Foundation to keep developing such stories, keep deepening this thought, and also keep giving such platforms to the children and the teachers who are doing some outstanding and very humbling work. And I think this is a human service to the future, and the future we owe to the children. So thank you, and over to the futurists who are standing for the future. So thank you, Tanvi. Back to you. Thank you, Saurav sir, for highlighting about the Green School initiative and how it addresses the need of spreading awareness about the environmental issues, like what the Green School initiative has already been doing in the eastern region. Thank you so much, sir. We now go ahead with the much awaited panel discussion on Futurists for the Future. The panel brings together environment heroes and green buddies who have done exemplary work in the field of environment, intending to have a greener future. I would now request my colleague, Mr. Ravi Shankar Das, Associate Fellow Environment Education and Awareness TERI, and Ms. Khushbu Prajapati, Executive Education, Corporate Social Responsibility, Tata Steel Limited, to kindly moderate the panel discussion. Over to you. Thank you, Tanvi. Good morning, everyone. Welcome to the thematic track under WSDS Summit 2022. My name is Ravi, and I'm the Associate Fellow in TERI and also the co-lead for the project, the Green School project. And I have with us today Ms. Khushbu Prajapati, and we both will be moderating the session. So to begin with, we have with us today environmental heroes across India who have made unmeasurable contribution for the conservation of our environment. For waste, a boon or resources, our environmental hero, Mr. Naman Gupta. Mr. Naman Gupta is an entrepreneur by choice and a true nature lover. Born in 1994 in Delhi, Naman Gupta is a BCom graduate from Delhi University, currently pursuing his master's from IGNOU. Not only that, he is also the founder of Code Efforts Private Limited, which works on recycling cigarette butts. And along with him, we have our green buddy, Ms. Sejal Kumari, student from St. Mary's School, Noamundi, Jharkhand. Let's hear for them. Mr. Naman? Thank you. Thank you, Ravi sir. How are you? Thank you, everyone. It's been a great pleasure to connect with you all. I would like to thank TERI, first of all, and Tata Steel Foundation, all our co-panelists, and also all our green buddies and all the attendees who have joined in for this wonderful summit. अब आज हम इस summit के लिए इकट्ठा हुए हैं
तो मैं नमन गुप्ता, कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक, आप सबके साथ अपनी कहानी और कुछ अपनी जिंदगी के लम्हे शेयर करूंगा ऑन द थीम वेस्ट, अ रिसोर्स और अ बोन. So I'll just request Ravi sir to please share the presentation that I had shared with you. So we'll continue. Yes, thank you. So I'll just request you to please switch on to the third slide. Yeah. So जैसे कि आप लोग अभी अपने स्कूल एज में हैं, तो वैसे ही अभी मैं जैसे 27 साल का हूँ. तो जब मैं 10-12 साल का था, तो मेरे को स्कूल जाना बहुत पसंद था. एजुकेशन रिसीव करना, दोस्तों के साथ मिलना, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने में मेरे को बहुत मजा आता था. तो रोज सुबह मैं उठ के तैयार हो जाता था, नहा धो के एकदम रेडी हो जाता था स्कूल को निकलने के लिए. और जब मैं रेडी होता था, नहा के मैं तैयार होता था, तो जो मेरा टॉवल होता था वो मैं बालकनी में सुखाने के लिए टांगने जाता था. तब हर दिन ये जो मैं टॉवल सुखाने अपनी बालकनी में जाता था, तो मेरे घर के ठीक सामने एक अंकल रहते थे अपने घर में. उनसे मैं रोज हाय हेलो ग्रीटिंग्स शेयर करते थे. मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था. वो मुझे अपने स्कूल जाने के लिए वेल विशेस देते थे. तो तब मैं एक चीज नोटिस करता था कि ये अंकल रोज सुबह उठ के एक हाथ में अपने चाय का कप और दूसरे हाथ में एक सिगरेट लेके रोज सुबह बैठते थे. तो तब क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल का था, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ये एग्जैक्टली क्या पी रहे हैं. फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं स्कूलिंग कंप्लीट करी. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं कॉलेज में आया. कॉलेज में मैंने बीकॉम करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो वहां पे भी मैंने सेम प्रॉब्लम देखी कि आसपास हमारे बहुत सारे लोग सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं. और ना ही सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, पर जो इसको पीने के बाद जो फिल्टर बचता है उसको जमीन पे या हमारे पर्यावरण में फेंक देते हैं. तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती थी. और मैं सोचता था कि ये क्या हो रहा है. क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हम ये सिगरेट को या तो बंद कर सकें, या ये जो वेस्ट बन रहा है हमारे पर्यावरण में जो दूषित कर रहा है, उसका कोई सल्यूशन या कोई अप्रोप्रिएट डिस्पोजल है कि नहीं. फिर मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि सिगरेट बट्स क्या है और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट, थैंक यू. रिसर्च करने पे मैंने ये पाया कि हमारे देश हिंदुस्तान में 100 बिलियन से ज्यादा सिगरेट्स कंज्यूम होती हैं सालाना. और ना ही इतने ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम होती है, बल्कि हमारे देश में हर साल 26,000 टन से ज्यादा सिगरेट बट्स हमारे पर्यावरण में फेंका जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. ये तो रही बात इंडिया की. अगर ग्लोबली इसके बारे में चर्चा करी जाए, तो मेरी रिसर्च से मैंने ये पाया कि सिगरेट बट्स ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम है. एक सिगरेट बट को 10 से 12 साल लगते हैं नेचुरली डिकम्पोज होने में. और एक सिगरेट बट इतना हार्मफुल होता है कि वो आधे से 1 लीटर पानी को बहुत आसानी से दूषित और खराब कर देता है. अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को रिसर्च और समझने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस सिगरेट वेस्ट को रीयूज करके या रिसाइकल करके इसका कुछ सदुपयोग
या कोई बेटर ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा जाए जिससे हमारा पर्यावरण भी बचे और साथ के साथ इसका एक बिजनेस मॉडल तैयार करा जाए। इसी सोच के साथ और इसी सिगरेट वेस्ट की भयंकर समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिससे हम सिगरेट वेस्ट को पूरी तरह रिसाइकल कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। इस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की खोज के बाद सन 2018 में मैंने एक सिगरेट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की एक कंपनी खोली जिसका नाम हमने रखा कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड। कोड एफर्ट में हम सिगरेट वेस्ट को मैनेज करते हैं और एक एंड टू एंड क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग प्रोसेस से इसको रिसाइकल करके इसके बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हमारी जो कोर एक्सपर्टीज है वो ये है कि हम ये जो सिगरेट वेस्ट है इसको 100% रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं तो हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक ऐसा सिस्टम मार्केट में प्रोवाइड करा जिससे हम आज की डेट में बहुत सारे राज्यों से 200 से ज्यादा जिलों में हम अपने वॉलंटियर्स, कूड़े वाले, रैक पिकर्स, कलेक्शन एजेंट्स और बहुत सारे सहयोग के साथ सिगरेट बट्स को इकट्ठा करते हैं और उसको हमारी फैक्ट्री नोएडा तक पहुंचाते हैं। जब ये सिगरेट बट्स हमारी फैक्ट्री में हमारे पास पहुंचता है तो इसको हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करने के बाद हम इस रिसाइकल्ड मटेरियल से 500 से ज्यादा डिजाइनर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी शुरुआत 2018 से आज तक हम इस मुहिम से 1 बिलियन से ज्यादा सिगरेट बट्स को रिसाइकल कर चुके हैं। साथ ही साथ आज की डेट में हमारे साथ हजारों रैक पिकर जुड़े हुए हैं जो ना ही सिर्फ पर्यावरण को बचाने में और हमारे देश को सिगरेट बट्स मुक्त बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं और उसके साथ उनकी मेहनत का उन्हें एक मॉनेटरी बेनिफिट या इनकम जिससे वो अपनी लाइवलीहुड मेंटेन कर सकें वो भी जनरेट कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा ये गोल है कि 2026 तक हम 3,500 करोड़ सिगरेट बट्स को पर्यावरण से बचा सकें जिससे हमारा पर्यावरण भी खुशहाल रहे और साथ के साथ हमारे बिजनेस से लोगों को इनकम भी हो और उनका रोजगार भी चले। इसी के साथ मैं अपनी टॉक खत्म करने से पहले एक लर्निंग या अपनी जर्नी से जो चीज मैंने सीखी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली खास उन लोगों के लिए जो वेस्ट को बूंद नहीं एक रिसोर्स समझते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत और अपना समय कुर्बान करने के लिए या न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, एक संदेशा जो मैं शेयर करूंगा कि इंग्लिश में पहले बोलूंगा कि वेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी, बिलीव इन योरसेल्फ and take control of it, because right now it is the need of the minute to solve this problem of waste as a whole in a collective manner. तो आप इसको एक मौका समझ के इसको पकड़ें, खुद पर यकीन रखें और निरंतर प्रयास के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे देश को साफ बनाने में, स्वच्छ बनाने में और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में आगे बढ़ें। थैंक यू ऑल, लवली ऑडियंस, थैंक यू। Thank you, Naman. Thank you very much. Indeed, you have done a great work in recycling the waste material.
We also have with us our green buddy, Miss Sejal Kumari. She has done some outstanding work during the Winter School Challenge under the project. So let's hear it from her as well. Sejal, you're on. Sejal, you have to unmute your. Good morning to one and all present here. Myself, Sejal Kumari of Standard 8 of St. Mary's School, Namundi. First of all, I would like to thank. I am extremely happy that I have selected for green activity, that is waste, and I have started this activity of Green Dreams since the month of August 2021. And I like this activity because as one day I went to my father's hotel and observed that my father used to give all the materials to the customers in the plastic bags. Then only I took my first step towards it to stop use of waste like plastic and requested my father to use paper bags or cloth bags as it is not harmful to the environment. Waste like plastic are very harmful to the environment as it lowers the carbon dioxide emission, and it is the most destructive weapon than a nuclear bomb or an atom bomb. Its impact shall remain for a few centuries on future generation. So we should take pledge that we will avoid single use of plastic, and we should reuse and recycle plastic, and to educate others about impact of plastic in our environment, and to take action to make our universe plastic free. I have done many activities regarding stop use of plastic and making awareness among people that impact of plastic in our environment. Uh, Activities like I have gone to nearby places of various shops and requesting shopkeepers to stop use plastic bags and to use recyclable bags or cloth bags which are not harmful to the environment, and cleaning my nearby places and many more things, and I have really enjoyed it. So after this activity I have seen lot of changes in my hotel also and my nearby places also. So as we know, if we will take one step towards cleanliness, then see the world will follow you. So thank you. Yeah, thank you very much, Naman, for the informative session. Thank you, Sejal, for your bold action. You have been taking up such bold decisions and such bold activities in the community, not just within the family, but in the community. Let us move to our next session, which is on water, named Jal Sanrakshan or Jagrukta. All of us know that water is a very important element, but how many of us put a concerted effort for conserving it? In our next session, we'll be seeing such efforts, first of all, by our environmental hero and then by our green buddy. Our environmental hero, Miss Madhuri Bahadur. She is from Kalinganagar, Jajpur, Odisha. She is a community resource person, and she has done her diploma in civil engineering from Kalinganagar Polytechnic Institute. As a aspirant youth, she came in contact with Tata Steel Foundation in 2018, and then she was selected as a trainee for 45 days of Surya Mitra training under a CSR program of TSF. Uh, since then, she has been volunteering in various programs like women development, agriculture interventions, and water-related issues under the banner of TSF. Miss Madhuri is passionate towards water conservation, and so is our green buddy, Miss Saina Mahanti. Miss Saina is a student from St. Mary's School, and she also is from Jajpur, Odisha. Not taking much time, I would request Miss Madhuri to please start her presentation. सबको मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
पहले मेरा पीपीटी थोड़ा दिखाना है। माधुरी पीपीटी शुरू है। आप खुशबू, could you hear? Yeah, we can hear very माधुरी, clearly. वो पीपीटी ऑलरेडी है उसमें जो। हाँ माधुरी, आप बोलिए। मैडम, सबसे पहले तो ये है डूबीखल, जो कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत एक छोटा सा विलेज है, जहाँ के फॉरेस्टर एरिया है। फिर नेक्स्ट पीपीटी मैडम। हाँ, ये वो विलेज है डूबीखल बोल के। ये वहाँ का महिला है, जहाँ पे 18 हाउस होल्ड है। ट्राइबल सांथाली हो कमेटी है, जहाँ की डेवलपमेंट पूरा लो है। नेक्स्ट, इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं TSF से 2018 को जुड़ी, जबकि एक सूर्यमित्र ट्रेनिंग 45 डेज के हुआ था। तभी उसके 45 डेज के बाद मैं पुणे गई 6 मंथ के लिए। तो वहाँ प्लेसमेंट से गई थी, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से मैं रिटर्न 2 मंथ के अंदर चली आई। फिर आके फिर से TSF के थ्रू से वॉलंटियर पे काम कर रही थी, जुड़ी हुई वॉलंटियर पे काम की, जो कि मतलब बहुत अलग अलग वॉलंटियर पे काम की, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट और वाटर सोर्स। जब मैं वुमेन वाटर सोर्स के ऊपर काम कर रही थी, तभी पता चला कि जाजपुर में डूबीखल बोल के एक विलेज है, जो कि मुझे पता नहीं था पहले। तो फिर वहाँ जब गए तो देखे कि वहाँ का जो विलेज है बहुत पुअर है, ना जाने के लिए रोड सही है, ना वहाँ पे मार्केटिंग का कोई मतलब सुविधा है। तो वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चाषबास के लिए भी उन लोग के पास खेती करने के लिए वाटर नहीं था। तो फिर हम लोग को पता चला कि वहाँ पे एक स्प्रिंग है, जो कि वो सालों से पड़ा हुआ है, मतलब डेड हो चुका है बोल के बोले। तो फिर पहले हम लोग मीटिंग किए, तो पता चला कि वो थोड़ा थोड़ा जिंदा है। तो फिर हम लोग बोले कि हाँ, ये तो हम साफ करके कुछ कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग कुछ 1-2 महीना लग गया उन लोग को समझाने के लिए कि हाँ, ये कर सकते हैं। फिर महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ मीटिंग किए। बाद में वहाँ पे एक SHG रिफॉर्मेशन किए, तो फिर मान गए वो लोग। बाद में हम लोग मिलके, गांव वालों के साथ मिलके वहाँ पे वो जो स्प्रिंग था वहाँ जाके साफ किए। सर, नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट में हाँ, ये है डूबीखल। जब हम मिलके, गांव वालों से मिलके जब रिजुविनेट किए तब का है। नेक्स्ट। खुशबू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खुशबू, previous slide there was an तो यहाँ पे एक पॉन्ड था, जहाँ पे कि वो पूरा डिस्चार्ज हो गया था। तो हम लोग सोचे कि जो हम लोग रिजुविनेट किए, तो उस कैनल का वाटर सब इधर उधर चले जाएगा, वेस्ट हो जाएगा वो वाटर।
तो फिर हम लोग सोचे कि ये तो यहाँ पे एक नीचे में एक पॉन्ड है, तो वहां पे हम लोग कनेक्ट कर दिए, जो कि अभी रिचार्ज हो गया है और वहां पे डोमेस्टिक के लिए यूज हो रहा है और नहाने के लिए, फिर कुछ किचन गार्डन वगैरह भी कर रहे हैं सामने। और थोड़ा ऊपर में वो लोग मतलब सालों भर के लिए अभी खेती कर पा रहे हैं। बिफोर आफ्टर है, तो बिफोर में पहले ऐसे सूखा हुआ पड़ा हुआ था, और आफ्टर अभी तो पूरा पानी वाटर पूरा वहाँ पे है, अभी यूजफुल हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे मेरा सपना है कि सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत फिर और भी 100 है मतलब स्प्रिंग है जो डेड होके पड़ा हुआ है, डेड तो नहीं, थोड़ा थोड़ा जिंदा है, तो उसको हम सोच रहे हैं कि उसको भी हम कुछ करके रिजुबिनेट कर पाए। और फिर मेरा अपना खुद का एक ड्रीम है कि मैं को वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ कर पाऊं और गांव वालों को भी, विलेज में भी प्रमोट करूं। थैंक यू। थैंक यू माधुरी। क्या मैं रिक्वेस्ट करूं हमारी ग्रीन मडी साइना से, वो अपना प्रेजेंटेशन दे। Thank you, ma'am. Very good morning to everyone present over here. I am Zaina from St. Mary's School, Jajpur Road, and I'm currently studying in class 9. And today we are all gathered here for the World Sustainable Development Summit. And I'm going to speak about the project that I have done for the Winter School Challenge, that is the DIY bucket tap. So this project is made based on the theme of water conservation, and there were other themes as well, but I chose this theme because of some reasons. Since childhood, my father is really very disciplined in the way we spend our day, and the one thing he doesn't like is wastage. So particularly when it comes to resources, me as well as my family think that water is the most natural resource, a most important natural resource, and we should conserve it. So before jumping into any conclusion and implementing that on my project, I had a talk with my dad, and he recommended me the theme of water conservation. So I saw that some amount of water was coming out from our filter through a pipe, which was totally a waste. So I thought, why can't we use that water, and we can use that water for any other purposes except for drinking purpose. Thereupon an idea struck my mind, and that was to prepare a bucket tap system which could use the wasted RO water, and that can be used for wash purposes other than drinking purpose, because it was wastewater, so it was not fit for drinking. Then consequently, I found a plastic bucket and a tap, and in the next step, I took my father's help, which included warming an iron rod, which was used to make hole on the wall of the bucket, and there the tap was being fixed. Then I took the bucket or the total system near our filter, and from there, the water was collected in the bucket easily, and our portable, compact, and useful bucket tap was done. So now let's discuss how I'm using it. Since I told it was the wastewater, we cannot use it for drinking or consumption purposes. I am using it for wash purposes. Like my mother can wash dishes from using that water. We can wash our hands before and after meals. Besides this, we are also using that water to water our indoor plants and balcony plants. Now, wasted. And the second plus point is that this project is emphasizing on the part of reuse. We are using a plastic bucket to prepare this project, and here the plastic bucket has been reused. So this is also another plus point of the project. Now let's do a simple and approximate calculation. So let's see for a nuclear family where there are 4 members, and per day 2 liters per day 2 times the filter is filled.
So in average, we can see that 30 liters of water is collected in the wasted RO water is collected in the bucket. So this family per day it can save up to 30 liters of water. Means in average, if we see for 1 year, it can save up to 10,950 liters of water. Like this, if we encourage at least 100 families to make this simple DIY at home, they can save up to 10 lakhs and 95,000 of liters of water in a year, and which is really a very large amount. We know, so small, it is a small step, but we know that if we work together, this small step can turn into a big achievement. We all think that water, we will keep on getting water, but we don't know water will finish one day on earth, and that day the earth will not exist. All the living organisms will die. The human civilization will come to an end. Plants, animals, birds, all will die. So we all depend on water directly or indirectly. So this was my main motto through this project, that we can save and conserve water. So for giving our earth some more years, and giving human civilization and all other living organisms some more years to survive. Lastly, my cordial gratitude to the entire team of Green School, who gave me this golden opportunity to speak on this international platform. During lockdown also, Green School was the one who engaged with students in different fun activities, and the webinars were informative as well. So that's all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Ms. Madhuri and Ms. Saina. Without wasting any time, moving on to the next talk on wildlife wonders of nature, we have with us our environmental hero, Mr. Kalicharan Basumutari, advisor of Manas Mozigendary Ecotourism Society, Assam. Mr. Kalicharan was president at North Kolkabari unit of All Borough Students Union. The working areas of the union was covered for about 13 local villages. Since it was a full-time social service, Mr. Kalicharan and his friends has to protect houses and crops of villagers from wild elephants. But the biggest issue they faced was to stop the poaching of wild animals and timber smuggling from the forest. But being a local leader of All Assam Borough Students Union, he gave wholehearted support to his conservation practices initiated by his senior leaders and colleagues. Along with him, we have our green buddy from Tata DAB Public School, Ghatotan, West Bokaro, Ms. Dimple, and Mr. Kalicharan is here online today from the TERI Northeast Regional Center. Am I audible? Yeah. Okay. So, good morning everyone. सबको मेरी तरफ से नमस्कार. मैं बेसिकली मानस नेशनल पार्क जो भूटान के नीचे में है, वहाँ का एक एडजेसेंट विलेज, प्रिंस विलेज से हूँ. जब मैं वो डिग्री का पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा पोचिंग स्मगलिंग हो रहा था मानस में, और इसके वजह से मानस का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आया था. तो ये हुआ था स्पेशली बोरो पीपल का सेपरेट स्टेट डिमांड करके बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा था उस टाइम में. तो उस टाइम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी वो एक्टिविटीज उस एरिया में नहीं था. नेशनल पार्क होने के बावजूद भी वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल कुछ भी नहीं बचा था. इसलिए बाहर से आदमी लोग आके हमारा एरिया में आके गरीब लोगों को पैसा दे के हंटिंग करने में इंस्पायर किया था और पोचिंग करने में, और जो भी टिम्बर बड़ा बड़ा टिम्बर था वो लेके आ रहा था. उस टाइम में उन लोगों को देख के हमारा मन में बहुत मतलब दुख महसूस हुआ था कि ये बहुत गलत हो रहा है. लेकिन सोसाइटी को संभालना उस टाइम में हमारा हाथ में नहीं था. तो इसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो उस टाइम में एक ये हुआ था
पॉलिटिकल सोल्यूशन भी हुआ हमारे एरिया में। BLT बोल के बोडो लिबरेशन टाइगर, उन्होंने वो आर्म्स स्ट्रगल कर रहा था, उन लोगों के पास बहुत सारा इलीगल आर्म्स इम्यूनेशन था। तो वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन होने के बाद मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वो एकॉर्ड होने के बाद इन लोग सिर्फ इलीगल आर्म्स वो मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर किया। तो वहाँ थोड़ा पीसफुल नॉर्मल से आया। लेकिन पोचिंग करने वाला जो बंदूक था, अराउंड 40+ बंदूक उस टाइम में था हमारा एरिया में। वो अब उस टाइम में भी था और पोचिंग रैम्पेंटली चल रहा था उस टाइम में, और टिम्बर फेलिंग भी चल रहा था। तो वो पीसफुल नॉर्मल सी सिचुएशन वो अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारा स्टूडेंट का ऑफिस, वो जो स्लाइड में देख रहा है वो हमारा ऑफिस है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑफिस से हम लोग इनिशिएट कर रहा था कि जो लोग पोचर्स है उन लोग सब लोगों को हमारा ऑफिस में सामोन करके उन लोगों को मोटिवेट किया था हम लोग। और जो भी हैंडमेड गन पोचिंग करने के लिए यूज़ किया है वो सब हमारा ऑफिस में सरेंडर करने के लिए हम उन लोगों को मजबूर किया था, मोटिवेट किया था फर्स्ट टाइम। जैसा हमारा रेगुलेशन पहले चल रहा था सेपरेट डिमांड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए, पावर के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए। अभी पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आ गया, तो ये हमारा प्रॉपर्टी, ये हमारा सब हमको ही अभी बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर जनरेशन का लाइवलीहुड है। तो ये सब समझाने के बाद कोई लोग मेन स्ट्रीम में आया, और ये फर्स्ट बैच जो पोचर लोग हमारा ऑफिस में सरेंडर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये पोचर लोगों को हम सरेंडर करवा के ट्रेनिंग भी दिया, और इसमें लोकल यूथ्स लोगों को भी कैसे टूरिज्म में इन्वॉल्व कर सकता है, उसको भी वो आइडिया लेके टूरिज्म का भी वो ट्रेनिंग, हम नेचर गाइड वगैरह का ट्रेनिंग उस टाइम में यूज कर रहा था। स्लाइड कंटिन्यू करो। तो पोचर लोगों को ये हमने उस टाइम में नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन कैंप कुछ भी नहीं था, तो हमने प्रोटेक्शन कैंप भी बनाया। कंटिन्यू करो प्लीज, बहुत सारा स्लाइड होगा शायद। एंटी पोचिंग ट्रेनिंग भी दिया, ये दूसरा कैंप में दिया है, ये एक कैंप हमारा कैंप है। तो इसमें उस टाइम में हमारा जो कर रहा था वो देखने से बाहर से वो थोड़ा इलीगल जैसा लगता है, क्योंकि हम तो अथॉरिटी नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो प्रोटेक्शन वगैरह ये सब करने के। इसलिए हम ये आइडिया किया कि वो फॉरेस्ट का जो फील्ड डायरेक्टर है उस टाइम का अभिजीत रावा, उसके साथ बात करके हम जॉइंट पेट्रोलिंग करने के लिए मजबूर किया। फॉरेस्ट स्टाफ को वापस बोला कि 1-2 हमारे साथ रहने के लिए बोला। फिर पेट्रोलिंग का काम हम लोग एक्टिविटीज कर रहा था। नाइट पेट्रोलिंग का ये एक सीन है। फिशिंग करने के लिए गया था आदमी लोग। ऐसा मसान बना के पोचर लोग कोचिंग करने के लिए इंतजार करता था। ये सब हम डिस्ट्रॉय किया जंगल में। बहुत सारा जहाँ पानी होता है, पानी पीने के लिए जहाँ जानवर लोग आता है, इस जगह में ऐसा मसान बना के कोचिंग करने के लिए वो कर रहा था। फिर नेक्स्ट रेंज में ये सेंट्रल रेंज है, हमारा ईस्टर्न मोस्ट रेंज है। सेंट्रल रेंज बांसबारी रेंज में ये कैंपिंग में हम लोग गया था। तो उस टाइम में हम ट्रैकिंग कर रहा था कि टिम्बर फेलर लोग किस एरिया में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क को छोड़ के भी और भी रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ईस्टर्न पार्ट में अभी भी उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है। टिम्बर फेलिंग चलता रहता है। तो टाइम मिलने से ही हम लोग उधर जाता है, वो मॉनिटर करता है क्या हो रहा है क्या नहीं। जाने से ही ऐसा मिलता है। नदी में भी हम लोग पेट्रोलिंग करना पड़ा था उस टाइम में। बहुत बड़ा नदी है मानस नदी, आप लोग मानस में विजिट करने से देख पाएगा। कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जंगल में जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो रास्ता वगैरह हम खुद वॉलंटियरली बनाया। ये ब्रिज बनाने का एक शीन था। वो
कैंपिंग के टाइम में रात होने से पहले हमारा उस टाइम का जनरल सेक्रेटरी रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये रास्ता बना रहा है जंगल में, पेट्रोलिंग पार्ट बना रहा है ये भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो यूनेस्को से एक टीम आया था 2005 में, तो वहाँ हम बात करके हमारा ऑफिस में, ये हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस में हम मेमोरेंडम दिया था कि वो एंडेंजर टेक हमारा मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लगा हुआ है, उसको बस हटाना है बोल के। सेंसस भी हम करना पड़ा 2007 में, क्योंकि 2008 में यूनेस्को से फिर आने वाला था। नेक्स्ट स्लाइड। और जो नेशनलिज्म है उसको एक्सपोचर लोगों को थोड़ा बता रहा था कि ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का दिन में ये भी एक्टिविटीज का ब्रिज बनाने के टाइम में। और अवेयरनेस हम जो भी विलेजर्स है, विलेजर्स का लीडर्स लोगों के साथ बहुत बार बात किया, अराउंड 100 टाइम्स हम लोग 100 टाइम्स अवेयरनेस कैंपेन किया। ऐसे ही बहुत अवेयरनेस करने के बाद कोई मतलब गांव से भी जो भी ट्रेडिशनल पोचिंग वगैरह जो कर रहा था, ये सब खत्म हुआ। अभी मानस फ्री फ्रॉम पोचिंग एंड स्मगलिंग। तो लास्ट में हम एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स और हमारा नेशनल लीडर्स लोग हैं। तो हमारा फॉरेस्ट को बचाना है। जैसे हमारा एरिया में मानस डिप्लीशन हुआ था, हमारा लोकल पीपल लोग उधर पोचिंग स्मगलिंग करने की वजह से, ऐसे ही एंटायर प्लेनेट में हमारा ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज के लिए ही जो भी पर्यावरण है हमारा नुकसान पहुंच रहा है। तो इस नुकसान से बचाना काम हमारा ही है, हम आदमी लोगों का ही है। तो जो भी फॉरेस्ट एरिया है अभी बचा है उसको हमको बचाना है, वाइल्ड लाइफ है सब बचाना है। और इसको बचाने का काम सिर्फ जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उन लोगों के हाथ से ही होता है। इसलिए लोकल स्टेक होल्डर्स लोगों को इंस्पायर करना है कि ये वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना जो भी है सब बचाना है बोल के। और इसको इंस्पायर करना बहुत आसान है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में इन लोगों का लाइवलीहुड हम इजीली दे सकता है। थैंक यू। Thank you so much, Kalin. Can I now request Dimple to do her presentation? Yes, ma'am. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Wisely said. A very cheerful good morning to one and all present over here. This is Dimple Singh of Standard 8 from Tata DAV Public School WBC Ghatotan. And today I'm here to present my views on forest and biodiversity, my actions related to it, and my self-composed poem. So forests are an integrated ecosystem on Earth which contains trees, shrubs, grasses, and more. The constituents of forests, which are trees and plants, form a major part of the forest. Furthermore, they create a healthy environment so that various species of animals can breathe and live there happily. Therefore, we see how forests are a habitat for plethora of wild animals. Biodiversity is incredibly essential to the planet, as it is what maintains the balance of ecological system. You know, in my school, there is a great culture of gifting saplings to the guests who are invited in our school functions. And in my school, we are in habit of celebrating all the important days related to environment, such as One Mahotsav, Earth Day, Water Day, and many more. Every year, on the occasion of One Mahotsav, our principal ma'am plants a sapling, and we distribute saplings to many parents and then visit to their house for the survey of plants growth. We do a water survey as well as energy survey. In my school, students, including me, made the bird's nest, seed bank, and even river was also cleaned by us. Logos on CFCs were made, many competitions like poem writing, slogan writing, making painting, we made best out of west, and many more. So the purpose of telling this all things is to just motivate you to make your surrounding a green and a clean surrounding. Now my self-composed poem on nature.
There is a world where I live in. Here the garbages are seen outside the bin. We the people are making it unclean and dirty. The condition is getting day by day pity. The factories dust and waste pollute the nature and air. Green plants are not seen more here. Our world is losing greenery due to urbanization. We all need to protect our nation. Our honorable Prime Minister has started Swachh Bharat Abhiyan very earlier, but still it's not working here. Everyone is much busy in their lives. For nature, all are becoming like knives. No one wants to clean this nation, but making it dirty has become their passion. The water, air, soil, everything is getting polluted here. We all need to protect our world, dear. The green plants are the oxygen giver, but we bothered about this never. We all need to start afforestation, and this will save our upcoming generation. These are the only trees which protect us from the harmful gases like enemies. Stop deforestation and start afforestation. Otherwise, a day will come. There will be number of trees very some. We won't be able to breathe and live. Now life is in our hand to give. Plant the trees and stop polluting environment promptly so that you can live a life comfortably. So this was the poem self-composed by me. Now at last I would like to add some good practices of my school. We have system of feeding birds class wise every day. 2 pots are kept in our school garden, one pot for grains and one pot for water. The students of the particular class provides that. In summer season we also audit many students house that they have nesting system and water at their house or in some open areas. At last I would like to mention that remember nature remember what you have today you will have to hand over it to your next generation whom to you are answerable. So remember the words of Gandhi ji. Nature has everything for your need, not for your greed. Thank you. I hope you liked it. Thank you very much, Dimple, and thank you very much, Colleen, for the informative sessions. And Dimple, your poem was so beautiful. And Colleen, आपके सारे जितने भी initiatives है जो आपने किया है, it is commendable. It is really commendable. Thank you for sharing with us. Going ahead, I would like to take the audience towards another initiative which was born amidst the most difficult time, that is during COVID-19. When all schools closed due to pandemic lockdowns and children were left with no clue how to continue their learning, then did this innovation, lockdown learning, came up. To tell us more about this initiative, I would like to call upon Miss Smita Agarwal, Head Education, Tata Steel Foundation. Ms. Smita has worked in the field of education for over 2 decades. Most of her work has centered around improving the conditions of schooling for the underprivileged children in India. She is currently focused on creating a scaled-up, replicable model to revitalize school education. Learning remains her personal passion, and I know it very personally. Over the years, she has worked to integrate international researchers on learning in rural Indian schools. I would request Smita to please go ahead with your presentation. Thank you, Khushbu, and thanks for, it's very delighted to, first of all, be in the part of this conference. And after hearing so many stories, I've become totally distracted from what I had to present, so I had to quickly recover. I thought it was very nice as Madhuri, Sejal, Naman, Saina, Dimple, and of course Kalicharan, Basumatari's Manas experience is really something that the world can learn from. So I think it's going very, very well. थोड़ा सा मुझे ये बताइए हिंदी में बोलें कि अंग्रेजी में बोलें खुशबू? हिंदी will be good, Smita. हिंदी में बोलें? Okay. हिंदी में बोलना ठीक रहेगा ना? तो ये काम हमने शुरू किया था जब मार्च 20 के टाइम लॉकडाउन हुआ था, तो हमने देखा कि ये तो तब पता नहीं था कि कितनी लंबा चलेगा ये लॉकडाउन, पर फिर भी लग रहा था कि बच्चों की पढ़ाई जो बच्चे सीख रहे थे, 1000 स्कूल्स प्रोग्राम पहले से ही 2015 से बच्चों के लिए
3-4 बड़े एस्पेक्ट्स में काम कर रहा था, लेकिन उसमें एक जो मेजर था वो लर्निंग था। जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा लर्निंग डेफिसिट अक्यूमुलेट हो जाती है, जो 5वीं 6वीं 8वीं क्लास में भी लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते और गणित नहीं कर पाते, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, घर में भी कोई माँ बाप उनकी मदद नहीं कर पाते, स्कूल पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, और रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है। बहुत दूर दराज के ट्राइबल एरियाज में बिखरे हुए गांव हैं, हेमलेट्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा अगर एकदम से इतने सालों की जो मेहनत है, बच्चों की जो प्रोग्रेस है लर्निंग को लेकर के, वो कैसे उसको हम बरकरार रखेंगे, वो रोल बैक होना शुरू हो जाएगी। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड खुशबू, तो हमने तुरंत सबसे पहले ये जानने की कोशिश की, खुशबू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि कैसे हम पहुंचे बच्चों तक। तो एक क्विक सर्वे किया गया 2000 गांव में, कुछ एस्टिमेट करने के लिए कि कितनी डिजिटल प्रेजेंस है इन इलाकों में। तो पता चला कि कम से कम 5% सिर्फ ब्लॉक्स में हम लोग काम कर रहे थे, तकरीबन 20 ब्लॉक्स में, 4 या 5 जिलों में। तो जो सबसे ही दूर दराज के ब्लॉक्स में केवल 5% स्मार्टफोन थे बच्चों के पास, 5%, और जो बेस्ट केस था वो भी 24-25% था, एवरेज आ रहा था 11 से 14% का, उसके आसपास। तो यही हमारे पास अवेलेबिलिटी थी डिजिटल की, ये हमको एक इंफॉर्मेशन पता चली। उसके बाद ये भी हमने बहुत क्लियरली समझा कि जिस तरह से क्लास का कंटेंट, क्लास में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, बच्चे, टीचर्स उनको सुपरवाइज करते हैं, रिसोर्सेज भी थोड़े ज़्यादा होते हैं क्लास में। अब तो बच्चा घर में है, अकेला है, वो लड़की के पास सिर्फ एक छोटा सा स्कूल बैग है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे क्लासरूम कंटेंट को अगर हम स्क्रीन पे ऐसे कैसे पुश कर दें तो काम नहीं चल पाएगा। तो हमने फिर दूसरा जो चीज़ किया सर्वे के बाद वो ये था कि हमने बहुत जल्दी स्पीड में हमने कुछ ट्रायल करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि क्या हम कुछ ऐसे कंटेंट तैयार कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे, क्योंकि घर में बच्चा अकेला बैठा है, पसंद नहीं आएगा तो छोड़ देगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कैसे हम इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कंटेंट तैयार करें, और कैसे उसको अपने घर में, अपने नेबरहुड में, अपने आसपास के जंगल के रिसोर्सेज को यूज करते हुए बच्चे किस तरह से विज्ञान और सोशल साइंसेज और लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के साथ कैसे बच्चे इन चीज़ों की अपनी लर्निंग जारी रखें। और साथ साथ इंटरनेट, तो बच्चों के पास तो बहुत कम के पास इंटरनेट था, लेकिन टीचर्स के पास इंटरनेट था, तो कैसे हम इंटरनेट का भी उपयोग करें जिससे कि बच्चे उसको इंटरनेट सर्च करके कुछ नई चीज़ें सीख सकें, मतलब अपनी दुनिया को विस्तार कर सकें। तो ये 3-4 चीज़ों को लेते हुए हमने काम स्टार्ट किया। और एक चीज़ जो हमारे टीचर्स ने की वो ये थी कि हमारे पास उस टाइम 700 टीचर्स थे और 35,000 बच्चे थे। हर टीचर ने अपने बच्चों को ट्रैक किया, वो 4 या 5 गाँव में बिखरे हुए थे बच्चे घरों में, बहुत दूर दराज के एरियाज में तो 10-12 गाँव में भी बिखरे हुए थे बच्चे। तो टीचर्स ने उन बच्चों को मैपिंग किया, मंडे मॉर्निंग को संडे तक उनको टास्क मिल जाते थे जो हम डिजाइन करते थे, सेंट्रल टीम मंडे से वो निकलते थे और अपनी उन्होंने पूरी एक शेड्यूल बनाई कि हम मंडे को किस किस गांव में जाके कैसे कैसे बच्चों से मिलेंगे। तो इंडिविजुअली या 2-2 में या छोटे छोटे 3-3 के ग्रुप में टीचर्स मिलना शुरू किया। मंडे ट्यूसडे को जाके टीचर्स को बच्चों को वो टास्क देते थे, समझाते थे क्या करना है। फिर वेडनेसडे थर्सडे को बच्चे अपना काम करते, टीचर्स मूव करते थे, और फ्राइडे तक उनका जो किया हुआ काम वो इकट्ठा करते थे टीचर्स, उनको फीडबैक भी देते थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपलोड करते थे जिससे ऊपर के लेवल्स के लोग उनको देख सकें। और उससे हम अपने वीकेंड पे उनको देखते थे और ये कोशिश करते थे कि कितना ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, और क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या इटरेशन करना है। तो इस तरह से वीकली साइकिल्स में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ आगे, चलो खुशबू नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं इसमें कि मदर्स, पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व हुए इस काम में। तो पहली बार बच्चों के माँ बाप इस काम में काफी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, जो पहले कभी भी नहीं हुए थे उस लेवल तक। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी क्लासेस, ये थोड़े बाद की बात है, पेंडेमिक जब थोड़ा सा ओपन हुआ था, तो आउटडोर में छोटी छोटी क्लासेस टीचर्स ने लेना शुरू किया था उस टाइम तक। और पर टीचर्स
उन गांव में भी गए हैं जहां सिर्फ एक गांव में केवल एक बच्चा था, वहां तक भी टीचर्स इतने ज्यादा मतलब एंथुजियास्टिक थे और उनको इतना तकलीफ महसूस हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, तो वो कुछ भी करने के लिए टीचर्स तैयार थे। तो बहुत खुशी से अपने इनिशिएटिव पे टीचर्स हर जगह कोने कोने में गए हैं। और आगे चलो खुशबू, नेक्स्ट। आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स की किस तरह से टीचर्स बैठ के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और ये सब अलग अलग ब्लॉक्स की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट। अच्छा, अब बच्चों ने क्या काम किया, ये थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमने शुरुआत तो बहुत छोटे से में किया। जैसे कि सबसे पहले हमने सिर्फ उनको बोला कि अच्छा आप इंटरनेट पे ढूंढो, जिराफ के बारे में ढूंढो। और जिराफ एक इंटरेस्टिंग सा एनिमल है, तो हमने कहा देखते हैं क्या होता है। बच्चों ने 2 घंटे के अंदर अपलोड करना शुरू किया, बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाई जिराफ के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, ये वो। तो हमको लगा तो इस तरह से इंटरनेट में बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमने कई सारी चीजें शुरू करी। एक जैसे आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैप का एक्सरसाइज हमने किया। तो मैप में भारत का नक्शा, स्टेट का नक्शा, डिस्ट्रिक्ट का नक्शा, ब्लॉक का नक्शा और विलेज का भी नक्शा बच्चों ने बनाया। ये वीक बाय वीक ये टास्क चलते रहे। आप देख सकते हैं इसमें बच्चों ने कितने सुंदर गांव के नक्शे बनाए। कुछ नहीं तो कम से कम 20-25 हजार नक्शे गांव के या उससे भी ज्यादा बने होंगे। अब तक क्या हुआ था कि ये प्रोग्राम और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स के बच्चों ने नक्शे बनाए हैं फर्श पे। और जब कॉन्टिनेंट्स के नक्शे बनाए तो उन कॉन्टिनेंट्स के बारे की कुछ चीजें भी उन्होंने ढूंढी इंटरनेट पे कि अफ्रीका में नाइल नदी के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन, सहारा डेजर्ट के बारे में, या अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में साउथ अफ्रीका में, या इस तरह की भी चीजें बच्चों ने ढूंढी जिससे कि थोड़ा सा उस कॉन्टिनेंट के बारे में भी बच्चे थोड़ा सा फेमिलियरिटी गेन करें। नेक्स्ट। तो इस तरीके से इंटरनेट सर्च, लैंग्वेज पे बच्चों ने बहुत सारा काम किया। मैंने आपको भी बताया था जिराफ के बारे में। फिर अपने एनवायरनमेंट में बच्चों ने क्या किया, तो जैसे आसपास में जो भी कीड़े मकोड़े हैं, एक सीरीज उस पे गया कि जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, आप ढूंढिए अपने गांव में पेड़ पे कौन कौन से रहते हैं, जमीन में कौन से रहते हैं। और बच्चों ने उन सब की देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग्स बनाई, और हर एक के बारे में जो वो जानते थे वो लिखा उन्होंने। और लेटर ऑन हमने उसको ऑर्गेनाइज भी करा कि अब जैसे स्पाइडर इंसेक्ट है कि नहीं है, या कुछ बच्चों ने मेंढक भी डाल दिया उसमें। तो धीरे धीरे करके हमने इसको फिर थोड़ी इसके ऊपर ये करके कि कौन सा इंसेक्ट में आता है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, जो दूसरे कैटेगरीज होते हैं उसमें आता है। और फिर पूरा एनिमल किंगडम तक बच्चे पहुंचे हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने किचन के अंदर साइंस कैसे सीख सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड साइंस क्या होती है, या अपने एनवायरनमेंट में अपने आसपास की जो शॉप, लोकल जो दुकान थी, जब थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल था तो दुकान को लेकर के उन्होंने मैथमेटिक्स सीखी कि किस तरह की चीजें रोज बिक रही हैं, कितनी उनकी यूनिट प्राइस है, कितना उनका बिक्री हो रहा है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगती हैं, वो इस तरीके से जब उन्होंने किया तो उनको बहुत ही मजा आया, और शॉपकीपर्स ने भी उनको बहुत हेल्प किया। आगे चलो खुशबू, नेक्स्ट। सो इस तरीके से हम लोग जब ये टास्क बनाते गए, ये हमने आर्ट और क्राफ्ट में भी काम किया। बच्चों ने स्टिक पपेट्स बनाए, और स्टिक पपेट्स को बनाने के बाद बच्चों ने छोटी छोटी पपेट शोज की। और पपेट शोज में बच्चों ने पूरा अपने ही उसपे मतलब पीछे कर्टन बनाया, सारा कुछ किया, और डायलॉग हुआ। तो लैंग्वेज की बहुत सारी, और फिर अपने पेरेंट्स को बुला के दिखाया, आसपास के नेबर्स को बुला के दिखाया, ये सब हुआ। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें बच्चों ने कोविड को ट्रैक किया। तो मतलब बहुत ही खुशी की और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इंटरनेट पे बच्चों ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी जो पूरी दुनिया ट्रैक कर रही थी, जो सेंट्रल पॉइंट था कोविड का डेटा शेयर करने का दुनिया के साथ में, बच्चों ने उस वेबसाइट को भी देख के उसको भी ट्रैक किया, और अलग अलग कंट्रीज के कंपैरेटिव डेटा देखा, और उनके ग्राफ्स को स्टडी किया, बार डायग्राम्स बनाए, फिर अपने ही
कंट्री में अलग अलग सिटीज को देखा कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में क्या चल रहा है, फिर अपने गांव के भी उन्होंने डेटा को इकट्ठा करके उसको भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो कई वीक्स तक ये कोविड का मतलब हमने साइंस और मैथ्स ऑफ कोविड किया। साइंस को लेकर के बहुत सारी चीजें इस पर हुई कि वायरस क्या होता है, वायरस किस तरह से फैलता है, मास्क को लगाने की साइंस क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग के पीछे की साइंस क्या है, इन सब चीजों पे बच्चों ने काम किया। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो खुशबू, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन, नॉट दिस। हाँ, फिर इसमें क्या हुआ कि जब वैक्सीन का टाइम आया तो हमने फिर वैक्सीन के ऊपर बच्चों के साथ काम किया कि व्हाट आर वैक्सीन्स। और हमें तो बचपन से कई तरह के वैक्सीन लगाते आ रहे हैं। उन एरियाज में बहुत डर था वैक्सीन को लेकर के। लोग बाग तो कुछ ट्राइबल एरियाज में जंगल में भाग के छुप जा रहे थे कि हमको वैक्सीन नहीं लगवाना है। तो बहुत इस तरह का, और ये बहुत मेजर इशू था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो एक जगह जोड़ा में कुछ बच्चों ने खुद ने मिलकर के तय किया कि अपनी टीचर से पूछा कि हमको आप ये ऐप में बताओ कैसे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होती है। तो उन्होंने सीखा ऐप में करना। फिर वो खुद ही निकल पड़े, दो दो के ग्रुप में वो घरों में गए लोगों के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनके साथ उन्होंने कहा कि हम आपको रजिस्टर करेंगे। कई जगह बच्चों को बहुत पुशबैक मिला। कुछ जगह लोगों ने कहा कि तुम हमको मारने के लिए आ गए हो और अगली बार मत आना नहीं तो तुम्हारी पिटाई करेंगे, ऐसा ऐसा भी लोगों ने बोला उनको। पर बच्चे एक बार जाके बैठ जाते थे तो बैठ जाते थे। गांव के जो सरकारी लोग भी जो आ रहे थे, अगर किसी ने मना किया तो वो मूव करके दूसरे जगह चले गए, उनको तो अपना 100 का टारगेट पूरा करना है। लेकिन बच्चे वहां रुक गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मना के ही मानेंगे। और इस तरीके से उन्होंने करीब 300 लोगों को रजिस्टर किया। फिर हमने इसी मॉडल को पूरे एरिया में एक्सपैंड किया। तब तक हमारा प्रोग्राम 35,000 से बढ़ के 1,35,000 हो चुका था, क्योंकि हमने 1 लाख बच्चों को और जोड़ा था। क्योंकि नवंबर दिसंबर में कोविड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अब स्केल काफी बढ़ चुका था। तो बच्चों ने तकरीबन 15,000 लोगों को रजिस्टर किया है कोविन ऐप पर। आई थिंक 4 से 6,000 कितने बच्चे थे, उन्होंने सारे ब्लॉक्स में रजिस्टर किया। और इस प्रोसेस में बच्चों की इतनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, डिजिटल स्किल्स उनकी इतनी बढ़ी, उनकी एक फीलिंग ऑफ जो सिटीजनशिप होती है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर रही हूँ, वो उनके अंदर बहुत बहुत हद तक आई। और उसके बाद उन्होंने उनको बाद में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए भी ये लोग आगे आए बच्चे, कि हम आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके देंगे, हम आपको फॉलो करेंगे जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो ये भी बच्चों ने बहुत बड़े स्केल पे काम किया। नेक्स्ट खुशबू। अच्छा, आई थिंक वी शुड गो बैक टू द प्रीवियस जो climate change wala. Can we go back? Yes, and Smita, if you can wrap up in 1 minute. Sorry? Yeah. So, can we go back to the climate change slide? हाँ, इसके पहले वाला, हाँ। So, दूसरा हमने जो एक इंटरेस्टिंग चीज किया था इसी लॉकडाउन लर्निंग के टास्क में, हमने पारी वेबसाइट है, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, उनके साथ टाइप करके हमने 6 क्लाइमेट चेंज की स्टोरीज, ये लोग पूरे इंडिया में कहाँ क्लाइमेट चेंज का कैसे कैसे, गुजरात के पैस्टरलिस्ट आप देख सकते हैं कि ये भेड़ चराने वाला ये जो आदमी का फोटो है, या नीचे आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सी वीड डाइवर्स, जो समुद्र में नीचे उतर के औरतें डाइव करके सीवीड इकट्ठा करती थी, उन तो समुद्र में किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। ये हाथी जो उसमें घुस जाते हैं, फॉरेस्ट ह्यूमन और वाइल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह महाराष्ट्र में जो ये बड़ा साइज का जो बफलो बाइसन है, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है। फिर और भी तरीके की बीज और ये सारे जो इंसेक्ट्स, जो अच्छे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशंस खत्म होती चली जा रही है। तो हमने बेसिकली 6 क्लाइमेट चेंज की स्टोरीज 6 इंडिया के रीजन से इकट्ठी करी पारी के साथ मिलकर के, और वो स्टोरीज हमने बच्चों को भेजी। ये केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का कोरापुट का भी एक स्टोरी था उसमें, और बच्चों ने उसको स्टडी करा, उसके वीडियोस देखे, उसके बारे में देखिए कितना कुछ उन्होंने लिखा है इसके बारे में। ये नक्शा आप देख सकते हैं, कहाँ की रीजन्स की उन्होंने स्टोरीज पढ़ी और उसके बारे में उन्होंने अपना काम किया और टास्क बना के हमको भेजा। तो ये भी बहुत बड़े स्केल पे।
soon. Okay, and if I have time, I'll go to the next slides. Otherwise, we can close. Khushbu, do I have time? Sorry, Smita. We are running out. We have to close? Yeah, yes, ma'am. Okay, so I've covered most of it. So this is what basically I wanted to share. Thanks very much. We would have liked the children and the teachers to come, but because of shortage of time, we really couldn't bring them. Thanks very much. Thank you so much, ma'am. I thank all the panelists today here for sharing their stories, and also the Green Buddies who have done an excellent job. Now I hand over the remaining to Tanvi. Thank you so much, Ravi. Thank you to all the panelists, including our Green Buddies, for sharing your experiences with us. It's really good to see the initiatives that you have been taking also during the lockdown and before the lockdown. So moving ahead, we now have the valedictory session, for which we have with us our dignitaries, Mr. Chanakya Chaudhary, Director, Tata Steel Foundation, Dr. Vibha Dhawan, Director General, the Energy and Resources Institute, Mr. Pankaj Satija, Managing Director, Tata Steel Mines, Mr. Saurav Roy, Chief Corporate Social Responsibility, Tata Steel Limited, and Ms. Neha, Senior Fellow and Area Convener, Environment Education and Awareness, TERI. At the very onset, I would request Mr. Chanakya Chaudhary, Director, Tata Steel Foundation, to kindly deliver the special address. Over to you, sir. Good morning. I hope I am audible. Yes, sir. Okay, so I have actually joined from a colleague's laptop because somewhere I think in my system I was not able to join in nevertheless. So morning once again, and thank you for inviting me. This is Vibha Dhawan, my colleagues Saurav and Pankaj, and other colleagues from TERI who have been with us in this Green School project. मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं Green School project में participate करता हूँ, because somewhere I get a feel that we are making a difference. We are making a difference to the today for all of us, and surely for a tomorrow which is going to be much more greener, much more environment friendlier, and the planet would hopefully be better for human living. तो इसीलिए जो ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट का, I think it was about 5 years back, if I'm not mistaken, that we started this project along with TERI. बहुत छोटी एक शुरुआत थी, 10 स्कूल को हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले झारखंड उड़ीसा में, एंड उसको हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर फाइनली अभी यहाँ पहुंचे हैं कि अभी हम लोग 34-35 स्कूल्स अक्रॉस झारखंड उड़ीसा में इस पार्टिसिपेशन होती है, जो कि एंड ये एक कहने को ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट है, लेकिन दिस इज अ प्रोजेक्ट व्हिच हैज एक्चुअली टेकन रूट्स इन द कम्युनिटी, व्हिच इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, बट दे आर आल्सो द citizens of the society even today, and if they can make a difference along with the families they live in or along with the communities that they live in, it will make a lot of difference to the future for all of us. And I think हमारे जितने भी operating locations हैं झारखंड उड़ीसा में, very small places, but I was happy to see the data that we have been able to reach out to not only the student community, which is typically about close to 20,000 student community, and close to 400 plus teachers, and thereafter the families, which is parents, about 30,000 plus parents, and the community at large 200,000, 2 lakh plus. The numbers is not important. ज़्यादा इसमें importance इस चीज़ का है कि हम लोग कैसे इस पूरे project को phase wise आगे बढ़ा रहे हैं, and we have been able to see success in some way in living with the nature. And I think हमारे, अगर मैं अपने बचपन से भी रिकाउंट करूं, जब हम लोग बड़े हो रहे थे और हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे और पेरेंट्स थे, तो वो लोग हमको हमेशा कहते थे कि कैसे चीज़ को रिसाइकल करना चाहिए, कैसे रीयूज करना चाहिए, कैसे कंजम्पशन को रिडक्शन करना चाहिए,
उस टाइम पे शायद हम लोग को ये समझ नहीं आता था कि इट इज एक्चुअली लिविंग विद नेचर. एंड आई थिंक द होल thought process of Green School project started when I personally attended the COP in Paris. And वहाँ पे डॉक्टर अजय माथुर, आपके धवन मैम के प्रेडिसेसर जो थे, वो और हम इकट्ठे गए थे. एंड आई रिमेंबर अ बुक विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रिलीज्ड. आई थिंक उसका नाम था परंपरा. जहाँ तक मुझे याद है वो किताब थी परंपरा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट बुक वॉज इट हैड स्निपेट्स ऑफ हाउ लिविंग विद नेचर has been a part of our tradition. That's why the name Parampara. और उसी thought process से हमारी टीम ने उस पर सोचा कि इसको कुछ project बनाया जाए. TERI was a very good partner which took our thoughts forward, and I'm happy to be here today with all of you. I must first of all thank all the parents, the teachers and students who have really worked hard in not only working on these projects, but also taking the initiative and also helping us to carve the next phase of the project. So today, if we are on a phase 4 of the project, I think something very interesting that all of you have done to bring in this buddy program, which means that if I am the trainee today, I become the trainer tomorrow. And I realize that all this is being done in some of our schools which have been there for many years, and a lot of events surely took place in some of these schools. मुझे एक शीट कल मिली जिसमें मैंने पढ़ा और देखा, बहुत अच्छा लगा सुन के और देख के. और दूसरा, आप लोगों ने जो ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है एक्सपर्ट स्पीक सेशन का भी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो मुझे याद है, आप जैसे हमारे कोलीग पंकज बैठे हैं, एक्सपर्ट स्पीक सेशन इन्होंने अपने ग्रुप के लिए शुरू किया पहले, which has become a very regular initiative for the company. And I'm happy that we are bringing this towards our Green School project. And one of the big names, Jamuna Tuduji, bhi isme participate ki hain. So I think we are really making a big difference, all of you together. And I'm very happy that it is actually taking shape. This project, I remember, has also been presented at COP by some of our colleagues from TERI and Tata Steel, and it was also recognized as one of the projects which can really make a difference to the society for today and tomorrow. So I don't want to continue speaking because I know there are others in the waiting who will also have their share of speech and address. And I must again thank, and I can see Neha, she's been a regular face for Green School project and us. So please keep the good work going, and I hope these phases continue to bring in champions in the student community, the parent community, and the community and society at large. Thank you so much. Thank you so much for your profound words, sir. It will surely help all of us in renewing the enthusiasm to take more such initiatives. I would now request Dr. Vibha Dhawan, Director General, the Energy and Resources Institute, to kindly deliver her special address. Over to you, ma'am. Thank you, Tanvi. Thank you so much. And Mr. Chanakya Chaudhary ji, Mr. Pankaj, Satija, Saurabh Roy, and all teachers, children. It's such a pleasure to be in this particular session. You know, I always believe that it is the students who are going to show us the way as well. It is not that it goes one way. They also tell their parents what needs to be done and where they are wrong. And surely let's take the responsibility that we have gone wrong. As Chanakya ji rightly mentioned, when we have grown up, we have seen that recycling is extremely important. हम लोग के घर में कुछ नहीं फेंका जाता था, maybe because, really speaking, after partition, that was the generation that had to build everything. And then we moved into consumerism. It was more of that we started copying the West, as if everything over there is great. And I remember my earlier trips to United States and looking at that they use pens just once. And we used to bring those pens ki wo bahut achhe likhte hain, but then we also moved to that wasteful economy. All our pens today, they are
one-time use. We never even buy the refill. So we have, I should say, it is we who are responsible for teaching our children wrong values. And therefore, we should also assume the responsibility that now we must correct them. And again, as I said, that children, perhaps they have already started questioning us. And I'll share with you something very personal sort of. I have two grandchildren. So the other day, one of them, who is just 8-year-old, he asked me a simple question. Because of the pandemic, all the wedding size has reduced to 40. And earlier it was, I should say, 1,000 plus kind. That is, and 4 functions with 1,000 people each. And he just asked me a very simple question: why do we waste? And in a way, I had no answer to give him. कि पहले हम इतनी लेविश शादियां क्यों करते थे? शादी तो 20 लोग के साथ भी हो जाती है. I had no answer, and I just told him. I said, "Beta, when you have money, you want to celebrate." And immediately his answer to me was, "But why? There are so many poor people. Why can't we simply spend that money and buy them clothes and food?" For which, really speaking, I had no answer. So that is what it is. The consciousness, it has to come from the children. And they are, therefore, they are our teachers. And it's very good. I mean, I shouldn't be saying good, but pandemic has also taught us one thing. And Smita ji just mentioned what all innovative steps they have taken to reach the village or rural children. But then it is that there are two ways. One is it has taught us there is a digital divide, and only 5% of the students, they had access to smartphones, and therefore teaching them by innovative methods is very important. It also brought parents into the teaching curve, that they also have some responsibility towards teaching children. And third important thing is that they started appreciating nature, because otherwise the classroom teaching does not even give them time, and there is no focus on what do they see around them. Insects, it's such an important thing. They must see those insects and look into the value of those. Earthworm, all these things, like what are they doing to your soil? So what is most important is that students should learn what is happening around them, rather than only looking into the book and reading. I'm not undermining that. That's also very important. But when I say it is equally important that they value looking at the earth, the ecosystem as a whole, and have respect for the biodiversity that exists around them. And Chanakya ji, you rightly mentioned we started on this journey in 2017. And that was basically that how do you engage, impart the local school students and involve them into teaching. And I'm very sure that it is going to, the impact of this particular teaching will be visible 20 years from now, because that is the time that these students will be leaders. They will be practicing whatever job they are into. They will be valued from the kind of training they have undergone now. Now, rightly, you also mentioned about the buddies program, because that always remains very important. Someone, again, who has learned the training is preaching it, and there will be a sort of passion which will be added by buddies, and that's the way they will take the message to the next generation. So I'm very glad, and I'd like to congratulate my own institute and Tata Steel for taking this initiative and bringing environmental heroes, green buddies, and all those who have done exemplary work in the field of environment. Now, a significant outcome of this thematic track is the launch of an e-module titled Enroute to the Green, and a handbook on green shoots, cases with herald a greener future. This is an amalgamation of knowledge, experience, and action-based work done by direct stakeholders of the project, that is students and teachers, as change makers and taking the narrative further in their context. The track also caters to discussions on the importance of education in
channeling young adolescents' actions towards a greener future. I'm glad this journey has enabled the youth to voice their views collectively, exchange ideas, and form a common network, reaching out to many more like-minded peoples and engaging them in environmental stewardship. With what started as 10-member schools from class 6 to 8 in remote Jharkhand and Odisha, the initiative reached out to additional 24 schools in the vicinity, reaching out to more than 2 lakh community members on average. I'm hopeful this initiative will pave the way for more substantial and more innovative partnerships. It will not be just limited to Jharkhand and Odisha, but it should perhaps reach to every corner of rural India. And I'll say not just to rural India, it should teach the way to other developing countries as well. I do look forward to discussions, and I'm sure our young participants will teach us much more in the future, and we will be able to take the message which will be engraved in their minds forever. So thank you so much for being with us and being a partner with TERI. And let's walk this road together for many more years and succeed. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words and for motivating all of us to make efforts towards achieving a sustainable future and to carry on such initiatives. We now, as Dr. Dhawan has already told all of us, we will now move ahead to launching Enroute to Green, an e-learning module for students covering themes like water, waste, energy, forest and biodiversity and their linkages with climate change and sustainable development goals. I would request our dignitaries, Mr. Chanakya Chaudhary, Director, Tata Steel Foundation, Mr. Pankaj Satija, Managing Director, Tata Steel Mines, Dr. Vibha Dhawan, Director General, the Energy and Resources Institute, and Mr. Saurav Roy, Chief Corporate Social Responsibility, Tata Steel Limited, to please launch Enroute to Green. Congratulations. Congratulations. Thank you, dignitaries. We also would like to announce about our green shoots cases which herald a greener future, which we will definitely be bringing out soon. It's a handbook on case studies, so this will be coming up soon. And I would just like to show a glimpse of the e-module that we have recently launched. This is the module that we've just launched, and this is a glimpse of the module. It has all themes related to climate change and sustainable development goals. And we have also incorporated our students' entries from the Winter School Challenge, which was conducted in the month of December. These are few of the winning entries. Yeah. So with this, I would now request Mr. Pankaj Kumar Satija, Managing Director, Tata Steel Mines, to share a few words of motivation with all of us on this occasion. Over to you, sir. Yeah, good morning, Chanakya sir, Viva ma'am, my colleagues Saurabh, Neha, Tanvi. It's a great feeling to always participate in the panel or the forum of TERI and Indian School.
चाणक्य साहब जैसा बता रहे थे कि the journey which started in 2017. So many a times questions were asked that environment is also being taught in school. So why this green school is needed? So we always remember one of the questions which used to come in mathematics, that a hunter came, there were birds on the trees, he fired a shot, and and few number of birds remained, many flew. So while we were teaching mathematics in the numbers, at the same time, we are also teaching that hunting is okay. You can kill a bird. This was the subtle message which the children were getting by solving this mathematics question. And we thought that we need to correct this. That was one such motive. Second was, in the modern education system, whether it is parent or it is teacher, we become very competitive. So if a child gets 90%, the father is okay, but the mother gets upset that why 99 not? Why only 90? How much neighbor has got? And we are somehow inculcating a feeling of competition within the children, where the world needs today collaborator, world needs today contributors. So we need to make a society of contributors and collaborators who can work on the impending issues of climate change, biodiversity, land use management. And there the Green School was thought, and it has served its purpose and continue to do so in making the future children a collaborator where all of them can come together and solve the issues related to the surroundings where they are staying. And we see many such shining examples like changing LED bulbs in Jajpur or rejuvenating a spring in Sukinda. And I'm very much sure that the journey will continue and we'll see many more collaborators and contributors in future. So we can compete, but the competition should be within ourselves. It should be with me only, that what I was yesterday and what I'm going to be tomorrow. But the contribution can come from the various quarters, from the teachers, from the parents, from the students. And age is not a requirement. My only appeal to the children here is that age is not a requirement to be a leader or to be a change agent. Guru Govind Singh took the leadership at the age of 9 when his father he achieved martyrdom. So he could have told that at the age of 9, how can I take the leadership of taking this path forward? Ashtavakra got a scholastic achievement at the age of 12. So all the children who are participating in this program, they are almost of the same age or maybe 1 or 2 years here and there. So my point here is that these are the two great leaders in India, and there are many others over the world who have defined the journey of civilization as well as the country direction itself, not by the educational background, but by the leadership which they attend at the childhood only. And that also means that what you need, a belief in yourself and conviction that you can change, you can be the change agent. And if that is there, we can make the world better what it was yesterday. Thank you very much for giving me opportunity to interact with you. And I'm very much happy to be part of this forum, and I would love to continue to be contribute in whatever way I'm given the responsibility. Thank you. Thank you so much, sir, for such a motivating address. I would now request Ms. Neha, Senior Fellow and Area Convener, Environment Education and Awareness TERI, to kindly deliver the vote of thanks. Over to you, Neha. Thank you, Tanvi. Very good morning to all the sustainability practitioners. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries present here. I would like to thank our special guest, Chanakya sir, who honored the event with his inspirational thoughts. Your interest and continued support, sir, has helped us in expanding the reach of the Green School. I would also like to express my thanks to Pankaj sir and Saurabh sir for their unstinted support and joining us to grace the event. A special heartfelt thanks to Vibha ma'am for sparing time from her busy schedule and joining us today. I would like to thank our environment heroes, green buddies, principals, teachers, students, and last but not the least, our esteemed audience for making this thematic track a grand success. A big thanks to everyone. Thank you.
Thank you.